गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूरोप ट्रेड। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है उस जो G20 समिट में अनाउंस किया गया है, उससे एक और न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है कि एंशियंट ट्रेड राउट्स जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और रोमन एम्पायर के बीच में एग्जिस्ट करते थे। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सर मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से जब वो साउथ मॉडर्न पुडुचेरी में जब डिगिंग कर रहे थे 1930s और 40s में, तो उन्हें एक इंडो रोमन ट्रेड जो है उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगा जो फर्स्ट सेंचुरी सीई से चल रहा था। तो इंडो रोमन ट्रेड जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन मैच्योर जो है फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी सीई में होना शुरू हुआ। अब अगर हम देखें जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अरेबिया, एशिया माइनर, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, इसकी वजह से ट्रेड कॉन्टैक्ट साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में बढ़े। इंडो रोमन ट्रेड जो है वो सी और लैंड दोनों के थ्रू किया जाता था। जो सी बॉन्ड ट्रेड था वो साकाज और सतवाहनास कंट्रोल करते थे, और जो लैंड बॉन्ड ट्रेड था वो कुशानास कंट्रोल करते थे। पॉलिटिकल टेंशंस हुई शाकाज और सतवाहनास के बीच में, जिसकी वजह से जो है ये ट्रेड कुछ टाइम के लिए जो है वो अफेक्ट हुआ। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऑगस्टस जो रोमन एम्परर थे, उन्होंने जो है सी राउट का ट्रेड शुरू किया, और उनको जो लोग उस समय सी राउट से ट्रेड करते थे उनको प्रोटेक्शन भी दी। एक टेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑन द एरिथ्रियन सी। इस बुक में भी एक अननोन ग्रीक सेलर ने बताया है कि किस तरह से ट्रेड जो है इंडो और रोमन एम्पायर के बीच में होता था। ठीक है। अगर हम देखें तो क्या ट्रेड किया जाता था, तो मोस्टली इंडो रोमन ट्रेड जो है वो लग्जरी आइटम्स का ही ट्रेड होता था। रोमन एम्पायर जो है वो रोमन गोल्ड कॉइन्स में पे करते थे इस ट्रेड के लिए। चाइनीज़ गुड्स भी जो है एक्सेप्शन ऑफ सिल्क के साथ वो पहले इंडिया लाए जाते थे, और उसके बाद ही जो है ईस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया के रोमन एम्पायर में भेजे जाते थे। सिल्क को तो वो डायरेक्टली जो है सिल्क राउट के थ्रू यूरोप में भेजते थे। इंडियन एनिमल्स भी, टाइगर्स, लायन, राइनोसरस, एलिफेंट, सरपेंट्स, ये सब भी जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से। आइवरी, टॉर्टोइस शेल्स, ये सब भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। और रोमन जो लेडीज़ थी वो इंडिया के पर्ल्स और पर्शियन गल्फ के पर्ल्स जो हैं उसके बहुत फॉन्ड होती थी। कई तरह के हर्ब्स, स्पाइसेस, इंडिगो, कॉटन क्लॉथ, सेसमे ऑयल, राइस, वुड एट्सेट्रा, ये सब भी जो है इंडिया की जो है बहुत डिमांड, इंडिया से बहुत डिमांड में होता था। ठीक है। अगर हम देखें रोम से इंडिया में क्या ट्रेड किया जाता था, तो रोमन हिस्टोरियन है प्लाइनी द एल्डर, उन्होंने जो है बताया कि मेनली जो गोल्ड है वो इंडिया में जाता था। और ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में था। ठीक है। इंडियंस जो है वो रोमन वाइन के बहुत ही शौकीन थे। अब उसको वो वरुणी कहते थे। और अपार्ट फ्रॉम वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, वेस्ट गर्डल्स, ये सब भी जो है रोमन एम्पायर से इंपोर्ट की जाती थी। अब कंक्लूजन इसका ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रेड टाइज थे इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, सरस्वती और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी। ठीक है। लेकिन सेकेंड सेंचुरी से ये जो ट्रेड है ये डिमिनिश होने लगा, और खासकर सतवाहना और कुशाना एम्पायर के जो है एंड के बाद जो है खासकर जो है ये इंडो रोमन ट्रेड जो है वो कम होने लगा। जब गुप्ता पीरियड आया तो इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ज़्यादा ट्रेड शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू रोमन एम्पायर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी विद्या समीक्षा केंद्र खोलने शुरू करो। तो विद्या समीक्षा केंद्र एक बेसिकली डेटा रिपॉजिटरी है जिसमें कि जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स हैं उनका डेटा जो है वो रखा जाता है। अब ये जो कंट्रोल रूम्स होंगे जिनको हम केंद्र कहेंगे, ये डेटा कलेक्ट करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, और ये एनालाइज भी करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को यूजिंग एआई और मशीन लर्निंग। किस तरह का डेटा रखा जाता है, जैसे कि पीएम पोषण, मिड डे मील प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग डेटा, टेक्स्ट बुक कंटेंट, यूडीसे प्लस डेटा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का डेटा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का डेटा। ठीक है। अब सेंटर जो है वो इसके लिए 2 से 5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जो है हर स्टेट को ये केंद्र एस्टेब्लिश करने के लिए देने को तैयार है। अब इससे जो है हमारी पूरी स्कूल लोकेशन की लेयर पूरी कंट्री में जो है वो हम मैप कर पाएंगे, और न्यू स्कूल्स कहाँ पर खोलने चाहिए, इंडस्ट्री क्लस्टर्स कहाँ पर होने चाहिए, उसकी वजह से हम प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी जो है वो एक लैंडमार्क
केस जो है वो सुन रहा है ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का, जो कि प्रोटेक्शन चाह रही हैं वर्ल्ड के ओशन से क्लाइमेट चेंज की कैटास्ट्रोफी की वजह से। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। 1982 में इसको यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के ही बेसिस पर बनाया गया है। अब इसमें जो है 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो है सीक्रेट बैलेट से इलेक्ट किए जाते हैं बाय स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। ईच स्टेट पार्टी जो है वो नॉमिनेट कर सकती है अप टू 2 कैंडिडेट्स, और जो है इनकी जुरिस्डिक्शन जो है इस ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर हो सकती है कंसर्निंग इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, तो कैसी कैसी तरह की जो है डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं इस कन्वेंशन के अंडर, जैसे कि डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम जोन्स, नेविगेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द सी, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड मरीन साइंटिफिक रिसर्च। अब ये ट्रिब्यूनल जो है ये हर तरह की स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन के लिए ओपन है। इवन जो स्टेट पार्टीज नहीं भी हैं उनके लिए भी ओपन है, अगर वो चाहे तो इसमें जो है वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकती हैं। सीट ऑफ द ट्रिब्यूनल कहाँ पर है? सिटी ऑफ हैम्बर्ग, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे रशियन पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्टॉक में जो हो रहा है। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया का फार ईस्ट के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी एशिया पैसिफिक रीजन में, और इकोनॉमिक पोटेंशियल को जो है वो एक तरह से सपोर्ट देने के लिए रशिया के फार ईस्ट रीजन को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या होल्ड करता है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये फोरम किया जाता है। अब रशिया का जो फार ईस्ट है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया है। ये बेसिकली 2 ओशंस के बीच का एक मैक्रो रीजन है, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक रीजन के बीच का, आर्कटिक ओशन के बीच का। ये फार ईस्टर्न रीजन जो है वो 4 टाइम जोन्स में फैला हुआ है, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है इंक्लूडिंग डायमंड, बोरैक्स एटसेट्रा, और 1/3 जो कोल रिजर्व रशिया के हैं और हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज जो कंट्री के हैं वो यहीं पर सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CSIR ने रिसेंटली लिस्ट ऑफ अवार्डीज अनाउंस की है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के लिए 2022 के। तो ये एक साइंस अवार्ड है इंडिया का जो कि हर साल दिया जाता है CSIR द्वारा। मोस्ट कॉवेटेड अवार्ड है मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेज का इंडिया में। ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, खासकर फंडामेंटल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स। ठीक है, तो अब जो इसके फाउंडर डायरेक्टर थे CSIR के वो शांति स्वरूप भटनागर जी थे, जिनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। पहली बार ये अवार्ड 1958 में दिया गया। कोई भी इंडियन सिटीजन जो किसी भी तरह की रिसर्च कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स है वो एलिजिबल होता है इस प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नीपा वायरस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक हेल्थ अलर्ट जारी किया है कोझिकोड में, जब 2 लोगों की जो है वो एक अननेचुरल डेथ देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि ये लोग नीपा वायरस से इन्फेक्टेड थे। तो नीपा वायरस जो है ये सबसे पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 के पीरियड में जो है वो ब्रेकआउट हुआ था। पहली बार ये डोमेस्टिक पिग्स में जो है अपेयर हुआ, और कई तरह के जो है ये डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस, शीप सब में ये वायरस पाया गया बाद में, और ये ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये नीपा वायरस जो है एक RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का, और ये क्लोजली रिलेटेड टू हैंड्रा वायरस होता है। अभी ये वायरस को जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में भी रजिस्टर किया गया है, लिस्टेड किया गया है। अब इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो एन्सेफेलिटिक सिंड्रोम है ये एक तरह से, और जिसमें फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा, पोटेंशियल डेथ भी हो सकती है। जब ये मलेशिया में इसका आउटब्रेक हुआ तो लगभग 50% जो केसेस में जो है डेथ हो गई थी। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स इंटेंसिव सपोर्टिव केयर ही दी जाती है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is History of India-Europe trade. This topic is important for your art and culture section and also your economy section. So India Middle East Europe Economic Corridor, which was recently announced at the G20 summit, has hearkened to an ancient trade route which existed between Indian subcontinent and the Roman Empire. So if we look at the historical background of this trade, then Sir Mortimer Wheeler, who was digging the south of modern Puducherry in 1930s and 40s, established the existence of this Indo-Roman trade in 1st century CE. So through this
Indo-Roman trade, of course, it started in 1st century BC and it truly matured in the 1st and 2nd century CE. So through this trade, the locations of Arabia, Asia Minor, and northeastern Africa got into picture, and they helped this establish the trade contact between South Asia, West Asia, and Europe. So Indo-Roman trade was carried out on the sea as well as on the land. So seaborne trade was being controlled by Sakas and Satavahanas, whereas the landborne trade was being monitored by Kushanas. So the political tensions between Shakas and Satavahanas did affect this trade for some time, but Augustus, the Roman emperor, encouraged the traders to take the sea route and offered them protection for that as well. Okay, so there is a text called Periplus on the Erythraean Sea, which is sort of a guidebook written by an unknown Greek sailor, and it is one of the major sources to reconstruct the history of this trade. So, what was being traded on this route? So, mainly the trade was centered around luxury items, and Roman Empire paid for these items in gold coins. So, Chinese goods, with the exception of silk, were also being brought to India, and then they were dispatched to eastern frontiers of the Roman Empire. And of course, silk was directly sent to the Europe using the Silk Route. So Indian animals like tiger, lion, rhinoceros, elephants, serpents, ivory, and tortoise shells were also being exported to Roman Empire. And the Roman ladies were fond of pearls from India and Persian Gulf. So different kinds of herbs, spices, indigo, cotton cloth, sesame oil, rice, wood, etc., was also in great demand in the Roman markets. If we look at the trade from Rome to India, then Roman historian Pliny the Elder has said that it was mainly gold which went to India because, of course, there was balance of trade which was firmly in favor of India, and we have records that Indians were having a taste of Roman wine, and it was called Varuni. And apart from wine, the other goods were also imported, like copper, tin, lead, coral, topaz, and waist girdles. So, in conclusion, we can say that Indian Roman trade was very strong in ancient times, including in the Saraswati and Indus Valley civilization. But this trade began to diminish from the end of 2nd century CE onwards. So, the end of Satvahana and Kushana empires in early 3rd century CE also contributed to the waning of this Indo-Roman trade. However, in the Gupta period, the trade between India and Southeast Asia burgeoned. Okay, so the next topic is Vidya Samiksha Kendra. This topic is important for your governance section. So, under the National Digital Education Architecture, the Ministry of Education is pushing states to open Vidya Samiksha Kendra. So, these Kendra are the data repository which will have a data from all schemes which are run by the government, by the Ministry of Education. So, these control rooms will basically these Kendra will collect data to track key performance indicators, and then they will analyze this data collected from government schemes using AI and machine learning. So what kind of data would be collected? So PM Poshan midday meal programs, teacher training data, textbook content, UDC Plus, National Achievement Survey, performance grading index data at the UT level, state or UT level. So this all data will be collected. So center has also allocated funds ranging from 2 to 5 crore rupees to each state for adopting and establishing these kendras. So this idea will help us to map the school location layer and with the population so as to assess the gross access ratio, and it can also help us to plan for new schools or for industry clusters to understand the skilling requirements of that area and help plan higher education institutions. Okay, so the next topic is International Tribunal for the Law of the Sea. This topic is important for your international relations topic. So International Tribunal for the Law of the Sea will hear a landmark case which has been brought by a group of small island states seeking protection of the world's oceans from catastrophic climate change. So basically, it's an independent judicial body which was established in 1982 by UN clause, and it consists of 21 independent members who are selected by secret ballot by the state parties to the convention, and each state party may nominate up to 22 candidates. And if we look at the jurisdiction, then any dispute which concerns the interpretation or application of this convention over all matters can be brought to this tribunal. So, certain disputes like delimitation of maritime zones, navigation, conservation and management of living resources of the sea, protection and preservation of marine environment, and marine scientific research, all these disputes can be heard by this tribunal. So, this tribunal is also open to state parties to the convention as well as to those who are not party to this convention, but they want to be heard through this tribunal. Okay, so the seat of this tribunal is in the city of Hamburg, which is in Germany.
So the next topic is Eastern Economic Forum. This topic is important for your international relations. So Union Minister of Ports will attend this Eastern Economic Forum, which is being held at the Russian port city of Vladivostok. So it was established in 2015 to support the economic development of Russia's Far Eastern region and to expand the international cooperation in Asia Pacific region. So it's a key international platform and for establishing the and strengthening the ties with Russian and global investment communities. So it also evaluates the economic potential of the Russian Far East region. So what is the Russian Far East region? So it is the easternmost part of Russia, and it is the macro region between or macro region border between two oceans, the Pacific Ocean and the Arctic Ocean. Far Eastern region spreads over 4 time zones. It is rich in natural resources like diamonds, borax, etc. And about one third of all coal reserves and hydroengineering resources of the country are here. So the next topic is Shanti Swaroop Bhatnagar Awards. This topic is important for your governance and science and tech section. So recently CSIR has announced the list of awardees for the Shanti Swaroop Bhatnagar Awards for 2022. So it's a science award in India which is given annually by CSIR. It is the most coveted award in multidisciplinary science in India, recognizing outstanding Indian work. It is given for notable and outstanding research in applied or fundamental sciences, biology, chemistry, environmental science, engineering, mathematics, medicine, and physics. So this award has been named after the founder director of the CSIR, Shanti Swaroop Bhatnagar. This was awarded for the first time in 1958, and any citizen who is engaged in research in any field of science and technology up to the age of 45 years is eligible for this prize. Okay, so the research work must be done only during the 5 years preceding the year of the prize. Okay, so the next topic is Nipah virus. This topic is important for your social issues. So Kerala Health Department has issued a health alert in Kozhikode after two people who have died due to unnatural deaths in the district, and they were suspected to have been infected with the Nipah virus. So this Nipah virus is an infectious disease which broke out in Malaysia and Singapore in 1998 and 1999 period. So it first appeared in domestic pigs, and it was found to be among the several. It was also found to be infecting other several domestic animals, including dogs, cats, goats, horses, and sheep. So this infection was also known to affect human beings. So this virus is an RNA virus of the family Paramyxoviridae. With genus Hanipa virus, and it is closely related to the Hendra virus. This virus has also been listed in the World Organization for Animal Health. So, what are the symptoms of this virus? So, it generally presents as an encephalitic syndrome, which is marked by fever, headache, drowsiness, disorientation, mental confusion, coma, and even potential death. So, during the outbreak of Malaysia, up to 50% of the cases ended up in death. So, currently, there is no specific treatment for this virus, and the primary treatment involves only intensive supportive care. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.